Hi, my name is Jasmine George. I work with this NGO called Hidden Pockets Collective. I also run a startup called Hidden Pockets, where we run care chat service for single people in the country. And one of the things that we have learned in the last few years, especially around sexual and reproductive health services, is that people find it very difficult, especially girls, to access services. So when we heard about this age of marriage debate where they are increasing the age to 21, we were a little surprised, because we already have a lot of young women who are coming to us for accessing services and they don't feel comfortable, be it 18, 19, 20 or 25. Single women in this country find it very difficult to find, access services. So this logic, that if you increase the age to 21, more and more women will be able to study more and they will be able to make more decisions, that's really not true. There are women who are 19 and 20 and would like to take the decision on their own. What we would suggest is let's support these women, to be able to have good life, to be able to access services. Because in India, marriage and sex is somehow equated. So people think that you can only have sex is only once you're married. So what happened to women now who are between the age of 18 to 21? It becomes really more complicated. And also with, we have a law that protects children. So since we increased the age to 21, are all these women who are under the age of 21 suddenly being seen as, children and they need protection of the law? What we would request is, before passing a law, it's really important to ask how it's going to affect the women who are going to be, people who are being affected by these laws. Are we criminalizing more and more young women because they want to be with their partners or they want to be sexually active? We are assuming that this would increase more and more women and more women will be going to colleges. But we really don't have any data to prove that. In our experience, what we have seen is give women a basket of choices and they would be able to make good decision. That's what we should be able to do. Support our women more. Hi. Based on my experience in this space, lack of awareness of the legal age of marriage, I think, is probably amongst the lowest contributors to the issue. There's just so much more. There are social concepts of izzat or honor and issues related to women's safety and caste differences, class differences, and how sex, let's say rape, is used as a means to exhibit power or is often used as a tool for taking revenge against a certain family that's trying to do things differently. Then there are issues related to poverty. So unless we are able to take care of that, I am not very sure of the massive difference that change in the marriageable age can bring. सिर्फ एज बढ़ा देने से, शादी की उम्र बढ़ा देने से क्या प्रॉब्लम या चाइल्ड मैरिजेस ख़त्म हो जाएंगी या प्रॉब्लम जो इस तरह की आ रही हैं वो ख़त्म हो जाएंगी? मुझे लगता है कि नहीं होंगी, क्योंकि अगर पूरे ऑल ओवर इंडिया के परिप्रेक्ष्य में हम बात करें तो जिस तरह से 18 साल की उम्र में भी बहुत सारी चाइल्ड मैरिजेस हुई हैं, यदि हम उनकी एज अगर 21 साल और कर देते हैं तो ये चाइल्ड मैरिजेस जो हैं ज़्यादा बढ़ने की संभावना हो सकती है, क्योंकि कानून का ठीक ढंग से जो इम्प्लीमेंटेशन है या एग्जीक्यूशन की हम बात करते हैं वो नहीं हो पाता है। और दूसरा, अगर हम दूसरे परिप्रेक्ष्य में बात करें तो पॉक्सो एक्ट के तहत यदि अगर हम देखते हैं कि इस तरह की कोई गलतियां बच्चों से, जो आज के युवा हैं, अगर वो करते हैं तो शायद उसका एक नंबर बड़ा हो जाएगा जहां पे बच्चों को उसके बार के पीछे जाना पड़ सकता है या पनिशमेंट मिल सकता है। खास करके लड़कों के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें या लड़कियों के भी परिप्रेक्ष्य में बात करें तो ऐसी त्रुटियां होती रहती हैं, बट ये नंबर, एक आंकड़ा बढ़ता हुआ नजर आएगा। अगर ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र में भी हमको देखने को मिलता है कि जो बच्चियां हैं, ख़ास करके उन बच्चियों के लिए क्या फैसिलिटीज़ जो हैं उस पर बात हो रही है कि नहीं हो रही है। इंस्टेड ऑफ ये कि एज को बढ़ाने की हम बात करें, द गवर्नमेंट शुड ऑल्सो कंसंट्रेट ऑन एस्केलेटिंग द फैसिलिटीज़, और कि फैसिलिटीज़ को कैसे और इम्प्रूव किया जाए। जैसे अगर हम शिक्षा की बात करते हैं तो शिक्षा के लिए क्या स्कूल्स ग्रामीण घर घर पे ग्रामीण लेवल पे बनाया जा रहा है कि नहीं बनाया जा रहा है, उसका एग्जीक्यूशन ठीक ढंग से हो रहा है कि नहीं हो रहा है।
रेशियोज़ जो लड़कियों की खास करके है वो बढ़ाई जा रही है कि नहीं जा रही है। बहुत सारी ऐसे चैलेंजेस आ रहे हैं कि लड़कियां बाहर पढ़ने के लिए नहीं जा पा रही हैं। स्कूल से डिस्टेंस होता है स्कूल घर और स्कूल का, तो लड़कियां नहीं जा पाती हैं। तो क्या इस तरह की फैसिलिटीज़ हैं क्या? हेल्थ को लेकर के कोई फैसिलिटीज़ हैं क्या? जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स हैं फैसिलिटीज़ के, इन तमाम स्कीम्स या फैसिलिटीज़ के, क्या वो सही ढंग से उन लाभार्थियों तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, उन बेनिफिशियरीज तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है? तो इन सब पे मेरा सजेशन है कि गवर्नमेंट को ध्यान देने की आवश्यकता है, इंस्टेड ऑफ इसके कि हम एज की बात करें। आज हम देखते हैं कि मेंटली रूप से जो बच्चियां होती हैं या बच्चे भी, लड़के भी होते हैं, वो 18 साल 17 साल की उम्र में काफ़ी मैच्योर हो चुके होते हैं। और बहुत सारे ट्राइब्स ऐसे हैं जहाँ पर कि शादियाँ होती हैं और हम उसको हमारे बस की बात नहीं होती कि हम उसको रोक सकें। तो कानून का इम्प्लीमेंटेशन भी बहुत ज़रूरी है कि क्या सही ढंग से कानून का इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सो माई ओपिनियन इज़ टू फोकस ऑन द फैसिलिटीज़ दैट आर एग्जिस्ट. Hi, my name is Sriparna Chakrabarty. I have a master's and PhD in cultural anthropology and demography from Brown University. I've been working in the area of gender-based violence and health and family and kinship for the last 15 years. I'm here to discuss why the current government regulation which is being proposed to increase the minimum age of marriage to 21 years is problematic. So the main reasons that have been given to us is that it will help combat malnutrition and it will reduce maternal mortality. Both of these premises are problematic. Firstly, because 50% of women enter pregnancy being anemic, and regardless of whether they become pregnant at 18 or at 21 or 22, this will continue. The reasons why women have such high levels of anemia in India has to do more with gender inequality and allocation of food within the household, as well as continuing and rising food insecurity in the country. The second reason which has been given to us is that it will help fight malnutrition. And again, this is not something which is clear at all in terms of how the law will do this. The problems that this law will create if this is done is that it will make it difficult for women to access sexual and reproductive health services, and especially abortion, which is already stigmatized. Abortion services will be very difficult for women to access. And what happens to those adolescents who are, let's say, between 19 and 20 right now? So they are not just adolescents, they are in early adulthood. Will they be able to access these kinds of reproductive health services should their marriages be declared illegal? It's not at all clear what will happen to them. The real way in which women can be empowered, since this law is saying that this is being done as a progressive move for women's empowerment, is really to increase the links between education and employment. In particular, because even if girls are being educated, they do not find meaningful and decent work. The majority of women who are employed in India are employed in the informal sector, and many of them have very poor working conditions. So there needs to be structural changes which enhance the working conditions for women and give them opportunities for meaningful, decent work. Under no circumstances should marriage ever be a livelihood strategy for women. But it has become the case because of this absence of linkages between education and employment. So I would urge everyone to speak to their MPs and MLAs to ask the government to reconsider their position on increasing the age of marriage to 21. Thank you. Hello, my name is Swati Das. I'm a student of law. In this video, I'm going to give my thoughts on the increased marriageable age for women in India. In my opinion, changing the age from 18 to 21 is going to take away the legal rights of women. The age of maturity in India is 18 years old. With the age of maturity, we are allowed to choose our government, but not our spouses. Secondly, if reason given for bringing in this change is gender inequality, then this is not going to solve the problem of gender inequality. Problems of gender inequality has to be solved with giving equal opportunities. Then another reason that was stated for bringing in this change was health of women and health of women during motherhood. Now, in rural areas, most women have, problems with malnutrition.
changing the age from 18 to 21 is not going to change that. A woman who is has problems with malnutrition is going to have the problem irrespective of the marriage age being 18 or 21. That has to be dealt in a different manner, and it cannot be dealt with by changing the age of marriage. Now, in a recent report, in an article by Times of India, in Rajasthan, many parents name their girl child, some things like Dhapu, which means that parents are fed up. Ramghani, which means that Ram, you have given us enough. Then Antima, hopefully this is the last. When the mindset of parents towards their girl child is so, changing the age of 18, marriage from 18 to 21 is not going to solve the problem. It might only increase the problems for these girls. To parents, they will look more of a burden because now they'll have to wait for them to get married till 21 years of age, not just 18. This will, one of the pros for this change was that it is going to give more opportunities for education. But what about families where, what about girls coming from these families where the mindset is such? They're not going to have equal opportunities or more or better opportunities of having financial independence or better education. This looks like a very good initiative on the surface level, but a lot of problems are overlooked. One such scheme or campaign was the Beti Bachao Beti Padhao campaign. According to the Parliamentary Committee of Women Empowerment, 78% of the funds for this particular campaign was spent on advertising. So, when we spend a lot of our time and money on problems that are on the surface and implementations that are on surface, we overlook a lot of problems that are, grassroots level problems. So, in my opinion, changing the age from 18 to 21 is not going to solve any problems. नमस्ते, मेरा नाम शिल्पा है और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी काफ़ी बातचीत हो रही है कि लड़कियों की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी जाए शादी की। तो मुझे ऐसा लगता है कि इससे लड़कियों को काफ़ी नुकसान है, क्योंकि अगर ग्रामीण क्षेत्र में देखा जाए तो लड़कियों को बहुत ही कम बाहर निकलने देते हैं, उनके ऊपर कंट्रोल ज़्यादा होता है कि और पेरेंट्स भी वेट करते हैं कि कब हमारी बेटी 18 साल की हो और उसकी शादी करवा दी जाए। तो ये जो दबाव है, कंट्रोल है, और इस लड़कियों को घर में रखने के लिए वो उसके ऊपर काफ़ी पाबंदियां लगाती है कि जब तक वो 18 साल की नहीं होते रहती उसको कैसे कंट्रोल में रखें और 18 की होने के बाद उसकी शादी करवा देंगे। तो अगर ये स्थिति अभी हो रही है और इसी स्थिति में अगर 3 साल उम्र को बढ़ा दिया जाता है तो जिस स्थिति में अभी लड़की गुजर रही है तो वो उसके लिए 3 साल और बढ़ जाएगी। जो कंट्रोल है वो उसके लिए बढ़ जाएगा और जैसे जैसे उसकी एज बढ़ेगी वैसे वैसे उसके ऊपर कंट्रोल बढ़ता जाएगा। और ज़्यादातर देखा जाए कि गांव में लड़कियों को बाहर आने जाने नहीं दिया जाता, पढ़ाई नहीं करवाई जाती। भले हम ये कह लें कि शिक्षा के माहौल में भी हमारा काफ़ी सारा माहौल बदला है, लड़कियां पढ़ाई कर रही, लेकिन गांव में अभी भी ऐसा नहीं है। लड़कियां पढ़ाई नहीं कर रही है, बहुत ही कम पढ़ाई कर रही है। कोई पढ़ाई कर भी रही है तो 8वीं 10वीं 12वीं, इससे ज़्यादा कुछ लड़कियां होगी जो पढ़ाई कर रही। लेकिन जो लड़कियां पढ़ाई छोड़ चुकी हैं, घर रह रही हैं, उनके लिए काफ़ी मुश्किल है, उनके ऊपर काफ़ी सारा दबाव है, ज़बरदस्तियाँ लड़कियों के साथ में की जाती है। और इस स्थिति में अगर लड़कियों की एज को बढ़ा दिया जाता है, शादी की उम्र को बढ़ा दिया जाता है, तो वो लड़कियों के लिए काफ़ी नुकसानदायक है। मेरा नाम संतोष है। मैं आदिवासी क्षेत्र में लड़कियों का पढ़ाने का काम करती हूँ। जैसे कि अभी बात चल रही है कि लड़कियों की शादी की उम्र 18 से 21 साल कर दी, तो उससे लड़कियों को काफ़ी नुकसान है, क्योंकि 16-17 साल की उम्र में ही लड़कियों की पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है और 18 साल की उम्र में उनकी शादी हो जाती है। तो उससे उनके ससुराल और उनके घर के बीच में आवाजाही रहती है, तो उनको एक खुशी महसूस होती है। और इसके बाद में जैसे 21 साल की उम्र कर दी है तो 3 साल तक उनको घर के अंदर पाबंदी रहती है, उनको बाहर नहीं निकलने देते हैं। और तो उनसे मतलब लड़कियों को मतलब कि आस पड़ोस में जो लड़कियां होती हैं उनसे भी मिलने नहीं दिया जाता है, और उनसे मतलब कि अपनी जो मतलब उनकी जो आज़ादी है वो भी उनसे छीन ली जाती है, और उनको पूरी तरह से एक अपन माने तो उनको पूरी कैदी बना करके रखा जाता है।